Hello everyone, and very good, good evening. I hope you all are good. Everyone is fine. Chain B, Kolhapur. I'm seeing you after a long time. How is everyone? So today in the class, what we are going to read again, radiation portion is left. So we will do that. But before moving on to that, let's do a question. So there is a question for you, and in meantime, let me know if I'm audible or if my video is visible or not. Okay. Am I audible? Am I visible? Is the screen clear? Okay. Thank you. That is very much helpful. Thank you. Chalo, let's do the question then. Okay, great. Read the question carefully and try doing it. Okay. So I will launch for you MCQ poll. Done it? This is a very good question, and actually it came previous year in JEE mains, and also some question later I have attached from NEET. So these sort of questions are coming both in JEE mains and NEET. And this is a good question, I would say. A little bit different question that we have done in previous classes. ठीक है? थोड़ा different question है, but it will highly help you in clearing the concept. So you don't have to worry about if you're not able to get the answer, but what you have to do, you have to read the question carefully and then you have to try solving it. Everyone will do this. Okay. I got one answer. And okay, that feels correct. Let's see. Yeah. देखो, reading is nothing without practicing question. It's very important. I mean, everyone should do it. Okay, two correct answers I got. That is really impressive if you have really done it. And I hope you have done it. I believe you have done it. Not hope. Great. Very good. Janvi Yanam, how are you people? Isarat. Janvi. CU is again, I don't know which Janvi it is. Again, I forgot, I guess. Harmit. How is everyone? चलो सभी लोग क्वेश्चन करो डन है okay so should I discuss now let's do it together now okay so what is the question here there is ice cube of dimension this dimension of ice cube is given and this is placed in an insulation box of wall of thickness 1 centimeter done it so there is ice cube uh, and it is cube it is ice cube it is so 3D dimension it is having so ice cube is looking like this okay
Its dimensions are given. Let's say this is 50, this is 60, and this height is 20. So it is like this. And it is placed in an insulation box of wall of thickness 1 centimeter. So in the surrounding, it has a what insulation uh, coating. Okay, and that insulation coating is of thickness 1 centimeter. Done it. Now what is happening? Insulation coating. Why we give insulation coating? If you remember, it is for radiation thing to not happen, right? So that it won't absorb heat from somewhere else through radiation, or it emits heat because of radiation. दोनों के लिए ही, ठीक है? Now the box keeping the ice cube at 0 degree of temperature is brought to a room temperature 40 degree. So जो जिस बक्से में रखा गया है ये ice cube, this box is now getting kept in a room whose temperature is 40 degree. So what will happen over here? यहाँ पे देखो, heat transfer will happen from room to the ice cube, right? And how much thick wall is around this? How much thick wall of insulation is around this? It is of 1 centimeter thickness. So through that thickness, heat will pass. I will explain more. Now the rate of melting of ice is approximately what? It is given that latent heat of fusion of ice is this much, and thermal conducting of insulation wall is this much. It means wall is, I mean, that is insulation wall. So uska basic purpose है to stop radiation effect. Okay, but it is थ्रू कंडक्शन, इट इज कंडक्टिंग, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका थर्मल कंडक्टिविटी के इंसुलेशन वॉल का कितना दिया हुआ है 0.05. सो इफ यू गो ऑन टू मेक इट 2D में अगर मैं बनाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा. ये है तुम्हारा आइस क्यूब, ठीक है, दिस इज योर आइस क्यूब, एंड इन द सराउंडिंग ऑफ इट देर इज इंसुलेशन का कवर, एंड दिस cover is of what thickness? This is of 1 centimeter thickness. Done it? So ऐसा ice cube है. Now this ice cube is at 0 degree, and now this whole dabba is placed in a room of temperature 40 degree. So now what will happen? Now heat transfer will occur through conduction, you know, because it has thermal conductivity finite 0.05. So heat will flow from outside to inside. Now just see how heat is flowing. जैसे हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस. सो इफ वी नो हाउ मच amount of heat it is receiving, then we can easily say with what rate ice is melting, right? Suppose delta Q amount of heat is getting transferred to the ice. In that case, how much amount of ice will melt? So let's say m amount of ice is melting per unit time. Okay, so delta Q by delta T, that we will get from the heat current wala formula, and this will be equal to m into L, that is latent heat of fusion of ice. Then so from here we can easily calculate. Then so the prime task is to calculate heat कितना अंदर जा रहा है. So just see from how many phases heat will go inside. When you are looking at 2D diagram, you can see 4 phases, but actually it is 3-dimensional and it is kept in a room. So from 6 phases, what heat will enter, है ना? एक दो तीन चार, किसको मिस किया मैंने? हाँ, एक ये वाला फेस है, इधर से जो सरफेस है ऐसे, और देन बॉटम वाले सरफेस से, ठीक है. सो देयर, I mean, imagine cube, it has 6 faces. So through 6 faces, heat will try to enter. Done it? इसका मतलब ये हुआ कि when you are going to calculate delta Q by delta T, you will write the formula KA, temperature difference divided by L. Done it? Now let's start putting the values. K is already given. Delta T is how much? Delta T is your temperature difference, that is your 40 minus 0. So that we know. What is L? L is always the length along which heat is traveling, right? So here, along what length heat is traveling before reaching to the source, to the required thing, I mean to ice. So it is traveling
length equal to the thickness of that insulation wall. So that is equal to how much? That is equal to 1 centimeter. So here L is 10 to the power minus 2 meter. Now the question is of area of cross section. So through 6 cross section it is entering. You have to here A will be equal to sum of all those areas, right? तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं ये वाला जो फेस है इसका एरिया होगा 50 into 20. सिमिलरली उसके ऑपोजिट का एरिया होगा 50 into 20. सो एक हुआ 50 into 20 और यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। फिर इस एरिया की बात करो, ये होगा 60 into 20. अगेन ऐसे there is one another face opposite to it, that is why 2 here. So 60 into 20 and this one on the top, so this is equal to 50 into 60. So 50 into 60 and such two faces are there, top and bottom. So right and left, front and back, and then top and bottom. So this total area will be this, and this is in centimeter square. Convert it into meter square. Okay, and then put the value. So you will get heat current over here. If you are getting heat current, calculation of rate will be easier. So देखो यहाँ पे मैंने calculation को include कर दिया है. Area देखो ऐसे हमने निकाला. So area value we are getting as how much? 1.04 meters square. So resistance L by KA. L का value क्या है? 1 centimeter. K है 0.05. Area आया इतना. So R we have calculated. Now dq by dt if you are going to write heat, that is equal to delta t. Delta t कितना था? 40 divided by जो भी resistance आया. So resistance हमारा कितना आया? 10 to the power minus 2 into 0.052. So dq by dt we have got it. Done it. So what value we are going to? Hi auntie, what is this? What is this nonsense? I won't hesitate in telling anything. Whatever you are writing in the chat section, I can upfront tell to you. What's your problem? Who is doing this? And you know, I can. What is this behavior? I don't know. What sort of people are here? Are you people a student? They're gone. Why to tell this to you? चलो ठीक है जान दो. dq by dt is this. ठीक है. I may be your auntie. I mean, I'm your teacher. You cannot call me by this thing. I don't know. Okay. Anyway. dq by dt is this. Okay. So how much value we are getting? This much. So this much amount of heat will enter per second. Now suppose m amount of ice is getting melted. Then I told you how much heat it will require? M into L. So just equate this to dq by dt, because this is the amount of heat you are transferring per second. So this will be the amount of, sorry, this M will be the amount of ice that will melt per second. Okay. So from here we can easily calculate M, and here M value will be how much? 61 into 10 to the power minus 5 kg per second. Okay. Anyone having any doubt? Anyone? Any doubt? किसी को कोई डाउट है? Any clear है ना? चलो ठीक है. So heat transfer, we have studied conduction, convection, and radiation. Okay, Harmi, thank you. So here we have already studied conduction, we have studied convection, we have to read radiation. So radiation in the yesterday class, I have already given you the background. What happens in radiation? जैसे ये example, this photo is quite befitting for explaining radiation. So यहाँ पे convection में क्या हो रहा है? Like the air particle that is close is getting heated, and then that is becoming more light and hence rising up, and then warmer, sorry, and then colder air is going down because of the gravity effect, and then heat is getting transferred from bottom to the top. ये हो रहा था convection में. In conduction, touch is required. So here is the touch. Okay. And in radiation, what is happening? So देखो यहाँ पे जो भी एटम्स है, कल के क्लास में जो लोग लास्ट तक रुके होंगे उनको पता होगा. तो these atoms are receiving the heat, that is they are receiving energy. Done है. And when they are receiving energy,
because of radiation, because this log is hot, and anything that is hot greater than temperature 0 Kelvin will radiate energy. So it is radiating energy. Nearby gaseous molecules, charged gaseous molecules are receiving that energy, and when they are oscillating, they are generating more radiation, and that radiation is reaching to us. So I have already discussed how, what is the meaning of radiation. रेडिएशन कब जनरेट होता है? जब चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट करता है, देन रेडिएशन जनरेट होता है. और अगर ये चार्ज पार्टिकल को एनर्जी थर्मली मिल रहा है, देन इट इज ऑक्सीलेटिंग, दैट इज बेसिकली कॉल्ड थर्मल रेडिएशन. डन. एंड आई टोल्ड यू रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर वेयर मीडिया इज नॉट रिक्वायर्ड. डन है. yesterday we discussed, and I also told you, if any light is falling, that is radiation is falling on any surface, then this radiation has two three four fate. I mean, what can happen to the radiation? So यहाँ पे रेडिएशन के साथ क्या हो सकता है? देखो, यहाँ पे when light is falling, certain sorry, radiation, let me call it radiation. So suppose q amount of radiation is falling on the surface per unit time. So that is incident radiation. Some will reflect, because it is light. Radiation is nothing but light. So some will reflect, some will what? Some will transmit. Refraction padhe ho tum log. So some is getting transmitted through the body, and some will get absorbed. And because of absorption, the body will feel the heat. So let's say QAB is getting absorbed. So clearly here Q in is equal to QR plus. Now if you talk about one is your absorptivity. ठीक है. Absorptivity हम कैसे define करते हैं? Amount of light getting absorbed divided by amount of light incident. Is my voice clear? Or anyone is facing any issue with my voice? You can tell me. मेरा वॉइस क्लियर है और इज इट ब्रेकिंग? देखो, डरने की जरूरत नहीं है, मुझे गुस्सा वुस्सा नहीं आता. अब तो बिल्कुल नहीं आता. बहुत एक्सपीरियंस हो गया इन चीजों का. ठीक है, तो तुम लोग बता सकते हो. क्लियर है वॉइस? चलो ठीक है. So absorptivity is this, and what is this reflectivity? So reflectivity is basically QR divided by Q in. Done it? And then transmittivity you can define. These are just the term you can define. If somewhere you are getting, you should understand what it is or from where it is coming. So this is this. ठीक है. उसके बाद मैंने कल के क्लास में बताया था, if body is of darker color, it will absorb more radiation. Reason, it is observation. Simple. So think of dark color, absorb more light. Done है. And think of, and object of light color will absorb less radiation. इसीलिए in the winter time we wear dark clothes, क्योंकि वो ज्यादा energy absorb करेगा, then it will make you feel more warm. And in summer we wear what? Light colored clothes. Done है. This is the reason. Second thing that I said is कि the body which is good absorber will also be a good emitter. Why? क्योंकि देखो, पहले किरचॉफ्स लॉ वगैरह पढ़ना था, अब नहीं पढ़ना है. सो बस मैं इतना बता दूं कि when it is absorbing more, when you are absorbing more energy, so you will get more heated. Then your temperature will be more, and in that case you will radiate more. ठीक है. So whatever is good absorber is also good emitter. So good absorber implies what? Implies good emitter. This you should know. डन है. और ब्लैक बॉडी कहने का मतलब ये नहीं होता है कि बॉडी का कलर ही ब्लैक हो. दैट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू. ब्लैक बॉडी मीनिंग द बॉडी विच इज अब्सॉर्बिंग ऑलमोस्ट ऑल अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट. जैसे एक बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया, यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा chink जैसा, chink means small hole I have left. So whatever light is entering here, suppose it entered here, now it will get reflected from this, it will get reflected from this, and there is a very small chance that this reflected light will get back to this chink, that hole, right? There is very less probability. So in this case, whatever light is entering the hole,
that light will keep roaming around in the container, and ultimately that will get absorbed. So this body here is also what? It is also black body. इसको भी क्या बोलोगे? Black body बोल. So black body necessarily has nothing to do with its color. Then black body meaning, इसका meaning ये है कि it is absorbing all the light that is falling on it, and hence it is a good emitter. That's the thing. ठीक है, चलो. चलो, thermal radiation at any temperature has a continuous spectrum from the small to the long wavelength. Now I'm telling you, मैं बहुत समय से ये बोल रही हूँ कि any body that has temperature greater than 0 Kelvin will emit radiation. ठीक है? And radiation meaning what? Radiation meaning light. And light meaning what? It will have wavelength. So whatever radiation it is emitting will have a continuous spectrum. I mean, it will emit light of almost all wavelengths. Okay? But intensity will vary. I mean, for some wavelength, more amount of radiation it will emit. For another wavelength, it will emit less amount of radiation. Intensity may vary. Lekin, almost for all wavelength, it will what? It will emit radiation. Okay? So small to the long, all wavelength will be contained. इसी को हमने पढ़ा है विंस डिस्प्लेसमेंट कर्व में. So in this curve you can see radiation energy per unit area, per unit wavelength getting emitted by any body. डन है. सो ये ग्राफ बेसिकली, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट इट, ये ग्राफ का सिंपल फंडा ये है कि हियर ऑन द वाई एक्सिस वी आर प्लॉटिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी गेटिंग रिलीज्ड, emitted, and here the wavelength is there, and graph you are getting is like this. So if you look at graph at this wavelength, we are getting maximum intensity of radiation. Done it? And this curve will extend like this. So if you talk about this wavelength, intensity is little, but still some radiation is getting emitted, and gradually it will die down like this. For very, very long wavelength also, you will get some intensity of radiation. That will be fainter, but still you will get. So इस ग्राफ से क्लियर ये हो रहा है कि whatever when a body is emitting radiation, it is emitting light of one wavelength. I mean यहाँ से देखो, अगर लाइट ऐसे emit हो रहा है, so यहाँ से whatever energy it is emitting, intensity of that radiation is maximum for one particular wavelength. ठीक है, जिसका कैलकुलेशन विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से हमने निकाला था, उसको हम बाद में देखते हैं. बट एक चीज हम ऑब्जर्व करते हैं अभी, रेज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स. सपोज करो you have some object and you are heating it. Keep on heating it more. What will happen? What will happen to the color? Can anyone tell me in the chat section? Have you seen that welding वाला शॉप? वहां पे या फिर घर में भी तुम देख लो, जब चीजों को जलाते हैं उसका इनिशियल कलर कैसा होता है और बाद में कैसा होता है. हाँ, रेडिश होता है. और जलाने से कैसा होता है? और जलाते हैं तो कैसा होता है? लोहा को जलते हुए कभी किसी ने देखा है? हाउ हाउ वो, यस, ऑलमोस्ट वाइट, यानी कि ब्लूइश वाइट देखा होगा, है ना? वाइट हैपेंस, दैट वी विल एक्सप्लेन हियर. Describe the change in color of the source. So color of source, as you will heat it more, its color will move from red to blue. यानी कि you know this विबजियोर जानते हो ना? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. व्हेन टेम्परेचर इज लो, जब टेम्परेचर लो है सोर्स का, इट विल लुक रेड, एंड व्हेन यू विल हीट द बॉडी, इट्स कलर विल चेंज इन दिस पैटर्न, फ्रॉम रेड टू ऑरेंज, देन टू येलो, देन टू ग्रीनिश शेड, ब्लूइश शेड, इंडिगो शेड, एंड फाइनली वायलेट शेड यू विल सी. ठीक है, सो समवॉट लाइक दिस. ग्रीनिश शेड दिखता कम है, तो मे बी इतना फेंट होता होगा कि दिखता नहीं है, बट रेडिश शेड इज वेरी मच विजिबल एंड वायलेट शेड इज वेरी मच विजिबल. सो एट हाई टेम्परेचर इट विल लुक दिस. नाउ डिस्क्राइब द चेंज इन शेप ऑफ द ग्राफ. सो ग्राफ कैसे चेंज होगा? अब देखो ग्राफ कैसे चेंज होगा, सेकंड को आंसर करते हैं हम. रेड जब वो दिख रहा होगा तो मैक्सिमम, एक्चुअली देखो, कोई भी समथिंग दैट इज हॉट इज लुकिंग रेड. कोई भी चीज रेड, ब्लू, ग्रीन क्यों दिखता है? बिकॉज इट इज लाइक
इट मस्ट बी एमिटिंग रेडिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ, द मैक्सिमम, है ना। और कोई भी चीज हमें, जैसे अगर तुम्हें पत्तियां ग्रीन दिख रही है, इट मीन्स ग्रीन लाइट जो है वहां से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों तक आ रही है, डन है, सो यू आर रिसीविंग दैट रे। इट मीन्स इफ at low temperature body is looking red, इसका मतलब that body at low temperature is emitting maximum intensity of radiation of wavelength equal to wavelength of red light, डन है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होगा इस केस में, लैम्डा रेड, रेड के बराबर होगा, ठीक है, डन है। एट लो टेम्परेचर graph will look like this. What will happen at high temperature when it will look bluish or violet type? In that case, it is emitting maximum radiation having wavelength equal to wavelength of violet light. So violet light का wavelength क्या होता है, और छोटा होता है। So second graph के लिए at high temperature पिक तुम्हारा कहाँ जाएगा, पिक तुम्हारा लो wavelength पे जाएगा। So graph should look like this. So इसका जो maximum intensity वाला पिक है ना, ये पॉइंट जो है वो किधर शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करेगा, बिकॉज इट इज लुकिंग ब्लूइश, सो वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज लेस देन दैट ऑफ रेड लाइट, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी इज हैपनिंग एट ब्लू लाइट, and that is why it will shift towards what graph will keep shifting towards left as you will keep heating the object. So this will be the shift in graph. Now third point, how does the wavelength of maximum intensity change? So you see here wavelength, how maximum intensity का wavelength change हो रहा है, it is decreasing, क्योंकि देखो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन एच सी बाई लैम्डा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। व्हेन रेड लाइट का एनर्जी क्या होता है, कम होता है, सो वेवलेंथ इज हायर, डन है। सो एज यू विल हिट द ऑब्जेक्ट, graph will shift towards left, it means maximum intensity wavelength is decreasing, डन है। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना। तो यहाँ पे the source gets bluer, the graph is taller at all wavelength and peaks further to the left. लेफ्ट की तरफ जा रहे थे, हाउ डज द वेवलेंथ इज चेंजिंग, द पिक्स शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ, है ना, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। सो द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। देखो मैंने वहां पे ग्राफ में गलती किया, एक्चुअली गलती ये किया, प्लीज उसको नोट कर लेना। मैंने ड्रॉ करने में गलती किया, और गलती ये है कि ये ऐसे कट नहीं होता है, ये ऐसे कट नहीं होता है, ठीक है। सो ये ग्राफ रॉन्ग है, कट नहीं होता, आई मीन इनिशियली ग्राफ तुम्हारा ऐसा था, तो फाइनली मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए था, ठीक है। ये कट नहीं होता, प्लीज इसको याद रखना। एक बार आईआईटी में ये क्वेश्चन आ चुका है, उसमें ग्राफ का ऑप्शंस दिया था, एक जगह कट हो रहा था, कहीं नहीं हो रहा था, कहीं नीचे कट कर रहा था, सो कट नहीं होता, यू शुड रिमेम्बर। सॉरी आई डिड मिस्टेक। देखो यहाँ पे ग्राफ बनाया ना, कट नहीं हो रहा है, इसका पिक किधर जा रहा होगा, सो इट्स पीक इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ग्रेजुअली इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। कलर यहाँ पे देखो ग्रीन है, तो इसका पिक और क्या है, और किधर है तुम्हारा, राइट की तरफ है, ठीक है। तो कलर के अकॉर्डिंग है ना, क्योंकि दिस वेवलेंथ्स आर रिलेटेड एंड दैट इज फॉर टी इज टेम्परेचर ऑलवेज टेकन इन केल्विन। इसको हमेशा किस में लेना है तुम्हें, इसको हमेशा लेना है केल्विन में। और लैम्डा एम तुम्हारा क्या है, इट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ, ठीक है। Wiens constant value is this much, ठीक है। So by using this we can calculate what lambda m if temperature is given, constant we already know, right? जैसे यहाँ पे देखो, the color of piece of iron heated in a hot flame first become dull red, then reddish yellow, and finally white hot. That is bluish tint, white hot. That's great term used, है ना, है ना। And by using this Wiens displacement law, we can also estimate the surface temperature of stars, है ना। क्योंकि अगर अगर मुझे
if we have to calculate their temperature, we can assess radiation coming from them. We will check कि कौन से wavelength का radiation maximum है. Done है? So by putting lambda m, we can calculate T. Done है? क्योंकि T directly we cannot measure. It's up of the range 10 to the power 9 Kelvin. No measuring scale you can use for this. Everything will melt. Everything will melt there, है ना? Which star is hotter, red star or blue star? जल्दी से बताओ. Which star is more hot, red or blue? Red is hot or blue is hot? Okay. Blue is hot. Yes. अंजुम रेड सो रहे थे तब से. रेड कलर का मतलब क्या हुआ? रेड कलर लैम्डा एम टी यूज करो. So red, it is looking red means maximum intensity wavelength is equal to wavelength of red light. Done है? So T will be equal to B by lambda red. And here T will be equal to B by lambda blue. Blue light wavelength is less. So it will be high. I mean, blue star is more hot, right? Red का मतलब hot नहीं होता. It's red in terms of physics, it's wrong. ठीक है, अभी अभी मैंने बहुत एक्सप्लेन किया तुम लोगों को. क्लियर है अंजुम? Blue star is hotter than red one. You can use the equation. Yeah, correct. चलो, नाउ देयर इज अ लॉ, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ. अभी तक मैं क्या बकवास कर रही हूँ? अभी तक आई एम टेलिंग यू, इफ अ बॉडी इज एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 Kelvin, इट विल emit radiation. Done. So how much radiation it is emitting per unit time? That is indicated by H. So H here is heat current. ये क्या है तुम्हारा? Heat current है. That is power. ठीक है. So now we are going to quantify this radiation. How much it will emit will depend on the temperature of the body. So let's say temperature is T, then it will radiate how much energy? A sigma T to the power 4. A is surface area, sigma is just Stephen's constant, and T is temperature, always taken in Kelvin. Always किस में लोगे इसको? Kelvin में. हमेशा Kelvin में पुट करना, डिग्री सेंटीग्रेड में कभी भी नहीं. A is area of body, T is absolute temperature, that is Kelvin, and sigma is a Stephen Boltzmann constant equal to this much. So if in the question it is asked body is at temperature 300 Kelvin, what amount of power it will radiate? So you will simply put here, suppose इसका radius r है. This is a sphere of radius r. Then you will put 4 pi r square into sigma into 300 का 4. Done है? This amount of power it will generate. Here H is the power, amount of heat current. That's ठीक है. So this simple law. Please remember. Questions recent years में इससे नहीं आया. I looked into JEE Mains PYQs also in NEET, but I didn't get actually. But it is in your syllabus. ठीक है. And H is equal to, most bodies emit only a fraction of energy. I mean, this one is for the black body, which is the best emitter. But सारे ही body, most bodies emit only a fraction of energy. Done है? So for that, you need to include emissivity. Done है? And in the question, it will be given. Emissivity is what? Ability to radiate. How much capacity it has to radiate. For black body, E is equal to 1. Done है? Because it has maximum capacity to radiate. So black body के लिए अगर use कर रहे हो तो E का value 1 लोगे. So in general, power getting radiated का formula क्या use करोगे? E A sigma T to the power 4. And for black body, E B is what? 1. For black body, it is 1. And for other bodies, it has some finite value less than 1. Okay. And that will be provided in your questions. Emissivity is dimensionless unit for perfect radiator, that is black body, E is equal to 1. And now there is one important thing. यहाँ पे जो third point make कर रहे हैं हम. So this important point is that suppose कर लो यहाँ पे एक body है, ये room है, room का temperature T0 ले लो, ठीक है? And here there is a sphere kept whose temperature is T. So
T and T naught both are greater than 0 Kelvin. T is also greater than 0 Kelvin. T naught is also greater than 0 Kelvin. So room will also radiate energy. Body will also radiate energy. Now the question is, if somebody asks you how much net amount of energy this body will radiate, I mean net amount of power, then क्योंकि it is radiating how much? Sigma E A T का power 4, है ना? But room is also radiating, so some amount of light is falling on this also. Then it means it is receiving also. So net amount that it is emitting will be equal to what? The amount that it is emitting minus the amount that it is absorbing, है ना? So that thing we will consider here. So how much amount it is absorbing, that you will write as, again, how much surface of this body will absorb energy. Same as A surface of body is emitting energy, A surface of body will absorb energy. So energy getting absorbed will be written as sigma E A. ठीक है, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, ओनली टेम्परेचर को तुम्हें यहाँ पे T04 लेना है. ये सारी चीजें सेम रहेगी. क्यों? बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम बॉडी, दिस स्फेरिकल बॉडी which is radiating and which is absorbing also. So how much radiating? Sigma EA T ka power 4. It is radiating because of its own temperature and it is absorbing because of surrounding temperature. So sigma EA T naught ka power 4. So net amount of energy that or power that it is emitting is equal to E sigma A T ka power 4 minus TS ka power 4. TS क्या है? Temperature of surrounding. So अगर question में surrounding temperature is included and then it is given calculate power getting radiated, then you have to take this into account. ठीक है? And in that case you cannot use this formula simply. You have to use it like this. ठीक है? चलो, किसी को डाउट है? Anyone? I'm giving you time. Before we start the another important topic, that is Newton's law of cooling. That is final one and that is very important. उससे question काफी आया है. Even previous year back to back it has come. किसी को डाउट है? Anyone? अंजुम, हरमित, फरनाज, देवानंद, इसारत, सूरा, Hosea. Anyone having any doubt? Okay, Harmeet, thank you for existing here. You're really a breach of, I mean, a sip of fresh air because nobody replies. Devanand, thank you, thank you. It really feels too good, you know, when somebody in your classroom is replying. People treat online classes like, okay, it's just there. It's not like that, you know. We put lot of effort into each and every class. I don't know, student don't take it seriously. कोई नहीं. So Newton's law of cooling we are going to read. अब देखो ये है क्या? ये है simple simple question we are going to address, that we have made a cup of tea and how much time it will take to I mean cool down from certain temperature to certain temperature. That question will get addressed by Newton's law of cooling. ठीक है? So ध्यान से हम देखते हैं. हमने एक कप चाय बनाई, सराउंडिंग में रख दिया. इसका टेम्परेचर T2 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर इज T1. सो डेफिनेटली चाय ठंडी होती है धीरे धीरे, है ना? सो कितने टाइम में it will cool down from what temperature to what will get calculated by using this law. Then so initially देखो चाय से वेपर भी निकल रहा है. Initially what happened? T2 is greater than T1 for sure. चाय गर्म है. After some time what will happen? चाय और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, चाय हो गई ठंडी. ठीक है? बट हाउ मच टाइम? व्हाट इज द रेट ऑफ कूलिंग? ठीक है? सो एक एक्सपेरिमेंट किया गया. सो लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट. और यहाँ पे कैलोरीमीटर यूज किया जाएगा जहाँ पे हीट का मेजरमेंट हम कर सकते हैं. हॉट वाटर वी हैव टेकन and there is this temperature scale, and now what we are doing, it has a temperature T2, this water, and this surrounding has a temperature of T1. So this water is acting same as the chai, same as tea. Okay. अब यहाँ पे हमने क्या किया, लाइक वी सपोज यहाँ पे चाय को डुबो दिया, चाय को डाला इस कंटेनर में एंड इट्स इनिशियल टेम्परेचर वाज T2 and we noted with time
how its temperature is changing by using this thermometer. ठीक है, and that temperature difference, I mean सपोज कर लो T इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर था T2, सो टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ चाय एंड सराउंडिंग वाज हाउ मच, T2 minus T1. At T equal to 1 second, temperature is T2 dash, so temperature difference T2 dash minus T1. Temperature difference means temperature of T minus temperature of surrounding. So temperature difference को y axis पे लिया और x axis पे टाइम को लिया और प्लॉट किया डिफरेंट वैल्यूज को. ग्राफ कैसा मिला? ग्राफ कुछ ऐसा मिला. नाउ द ग्राफ इज इंटरेस्टिंग. यहाँ पे ग्राफ को तुम ध्यान से देखो. इफ आई टॉक अबाउट दिस टाइम, अप टू दिस टाइम, so up to this time delta t has reduced by so much amount. It means what? It means initially, और अगर अगर ग्राफिकली भी देखना है तो चलो एक काम करते हैं. जैसे यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया है, ये टेंजेंट क्या मेजर करेगा? स्लोप ऑफ द कर्व. सो स्लोप ऑफ दिस कर्व दैट वी हैव गॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज हाउ मच? tan ऑफ दिस एंगल, है ना. एंड जस्ट ड्रॉ द स्लोप हियर इन द ग्राफ, इट मस्ट बी देयर. हाँ देखो, अब इस पॉइंट पे स्लोप को ड्रॉ किया, देन एंगल इज दिस, एंड ग्रेजुअली एट दिस पॉइंट एंगल इज दिस. ग्रेजुअली स्लोप इज व्हाट? स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ग्रेजुअली स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. अब देखो, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, यहाँ पे अगर स्लोप की बात करो तो अगर यहाँ से तुम नीचे स्लाइड कर रहे हो तो क्या हो रहा है? जल्दी गिरोगे कि लेट से गिरोगे? स्लोप इज डिक्रीजिंग, है ना. Here slope will become, यहाँ पे tangent बनाओ, slope will become parallel to the time axis, so slope is 0. Initially slope is higher, and slope of curve क्या होता है? dy by dx. Here dy की जगह क्या लिखोगे? डेल्टा t. dx की जगह क्या लिखोगे? डेल्टा t. So rate of change of temperature, initially rate is higher. So when t is very hot, let's say t is some 70 degree, so it will very fast come to 40 degree. And from 40 degree to 25 degree, that is room temperature, it will take significant amount of time. Done. So initially चाय जल्दी जल्दी ठंडी हो रही है, जल्दी जल्दी ठंडी हो रही है, उसके बाद एक certain temperature हो जाने के बाद it is cooling relatively slowly. ठीक है. So this was the observation. अब इसको हमने क्या मैथमेटिक्स में डालना है. सो न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने ये कहा कि rate of cooling of an object is approximately proportional to temperature difference. approximately proportional है between object and its surrounding. कहने का मतलब कि rate with which it is losing heat is directly proportional to temperature difference, and temperature difference means temperature of body minus temperature of surrounding. Done है. And here minus dq by dt is equal to k t2 minus t1. And k is what? K is a positive constant. It will depend on which factor? Area of surface of body and also nature of the surface of body. So K constant किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे और नेचर ऑफ सरफेस पे. सो अगर चाय को तुमने बड़े कंटेनर में रखा, एरिया इज इंक्रीजिंग, एंड इन दैट केस dq by dt विल बी हायर. आई मीन और फास्ट वो हीट को लूज करेगा. सो दिस कांस्टेंट K is including in itself area of that body. Done है. So Newton ने कहा fall of loss of energy per unit time is directly proportional to temperature का difference. Constant को define किया. ठीक है. Now if the temperature of body falls, जैसे देखो यहाँ पे अब हमें पता है ना, this is dq, amount of heat lost. Let's say this is a body of mass m, its specific heat is S, then heat that it is losing, dq को हम क्या लिख सकते हैं? ms delta t लिख सकते हैं. So here dq can be written as ms delta t. That is what we are going to do now. So dq ms dt2, change in temperature, that is initial temperature is T2, then in its change can be indicated as dt2. डन है. क्योंकि अगर बॉडी का टेम्परेचर T होता है तो चेंज हम dt लिखते हैं. डन. सिमिलरली वी हैव डन हियर. सो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को हमने dq by dt लिखा था, ms dt2 by dt. इट कैन बी रिटन लाइक दिस. नाउ minus dq by dt equal to k t2 minus t1. There is one more thing. यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लिया है? कैन एनीवन से?
While here negative sign it has taken, minus dq by dt क्यों है? Why not dq by dt? Anyone? Why not dq by dt? Why minus? Okay, emitted by system, इसलिए देखो हमेशा याद रखना जो रेट होता है ना, रेट, dq by dt तुम्हारा क्या है? रेट है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। डन। एंड दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और रेट हमेशा ही पॉजिटिव होता है। अब तुम ध्यान से देखो, डीक्यू तो नेगेटिव है क्योंकि इनिशियली चाय के पास ज्यादा एनर्जी है, फाइनली कम है, सो डिफरेंस इज नेगेटिव, है ना, ज्यादा से कम हो रहा है। सो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल इज नेगेटिव, सो dq इनहेरेंटली इज नेगेटिव। सो टू मेक दिस रेट पॉजिटिव, dq by dt को पॉजिटिव बनाने के लिए वी आर इंक्लूडिंग हियर नेगेटिव साइन। रेट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, दैट इज वाई। ठीक है। अब देखो dq को हमने क्या लिख दिया, ms dt 2 by dt, माइनस साइन को यहाँ पे रख दिया है, दिस इज दिस। सो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू T2 माइनस T1। अब देखो क्वेश्चन दो तरह का आया है, यहां से पूछ सकता है, अगर तुम्हें एक्सप्रेशन दिया dt2 by dt इज इक्वल टू माइनस k डैश T2 माइनस T1, अब मुझे ये बताओ k डैश इज फंक्शन ऑफ व्हाट? सो k डैश में k टर्म है, k by ms है k डैश, so it is function of mass of the body, specific heat, that is nature of the body, area of the surface of body, I mean इस k डैश किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है, दैट यू शुड रिमेम्बर। अगर सेम एक्सप्रेशन ऐसे दे दे, dq by dt इज इक्वल टू माइनस k T2 माइनस T1, अब k किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ सरफेस एंड एरिया, नॉट ऑन मास, एंड हियर इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन मास। ठीक है, सो प्लीज हैव दिस इन योर माइंड। अब देखो इस एक्सप्रेशन को हम यूज करके वी कैन कैलकुलेट इन व्हाट टाइम टेम्परेचर विल चेंज फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, that we can calculate. So here we are going to do dt2 by dt this. So here T2 is variable. Always remember in this case T1 is constant, है ना, क्योंकि T1 is surrounding temperature, it is constant, right? And T2 is temperature of chai which is variable. Done है? So here T2 is variable. Now if you are going to solve it, then constant को एक साथ लिखेंगे, variable को एक साथ लेकर आएंगे। सो dt2 by T2 minus T1 minus k dt, if we are going to integrate it, if we will integrate it, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? अगर dx by x minus 5 का इंटीग्रेशन पूछे तो क्या लिखोगे? ln x minus 5। ठीक है, आई होप इंटीग्रेशन इज क्लियर फॉर एवरीवन, आई हैव ऑलरेडी सेड यू दिस शुड बी क्लियर। So here in place of x, T2 is there. So integration, after integration you will get what? You will get ln T2 minus T1 equal to minus KT plus C. C, just for the formality we are writing, this is integration constant. Okay? Because we are not putting the limit. When we put the limit, there is no need of putting in integration constant. We have not put in any limit. So we are writing here integration constant. ठीक है, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। अब देखो T2 माइनस T1 को क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है, ln x को अगर 5 लिखते हो तो ln का मतलब क्या होता है? log बेस है e एंड देन इट इज x इक्वल टू 5। अगर log हटाना है तो x हो जाएगा e का पावर 5 इधर। ठीक है, सो हियर इट इज ln, दिस इज द लॉ, दिस इज द लॉ। डन है। सो यहाँ से अगर ln हटा रहे हो तो इधर जो भी है वो e के पावर पे चला जाएगा। सो T2 माइनस T1 इज दिस, सो T2 इज इक्वल टू दिस। I mean, why this equation is significant? This equation is significant for simply drawing the graph. For solving the question, we will use another equation. I will let you know. Don't worry. So, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं बताऊंगी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, सपोज T है और इसका टेम्परेचर इनिशियली था समथिंग 80 डिग्री ले लो, लेकिन मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि इसका टेम्परेचर 70 डिग्री से 60 डिग्री जाने में कितना टाइम लगेगा? फ्रॉम 70 टू 60, सो T2 हैज टू वैरी फ्रॉम 70 टू 60। अब चलो सपोज करो T1 टाइम पे टेम्परेचर कितना कितना था? 70 था, और T2 टाइम पे टेम्परेचर कितना है? 60। सो पुट द लिमिट हियर नाउ,
अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ln t2 माइनस टी1, ठीक है। लिमिट पुट करो यहाँ पे 70 60 इक्वल टू के, यहाँ पे क्या रखोगे, dt का इंटीग्रेशन t, सो हियर t, t2 से t1, सॉरी t1 से t2। अब देखो यहाँ पे तुम क्या करोगे, ln t2 का वैल्यू क्या है 60, t1 तो फिक्स है, t1 सपोज कर लो 25 डिग्री है, सो 25 माइनस क्या करोगे ln, हाउ मच वैल्यू यू आर गोइंग टू पुट नाउ, 70 माइनस 25, और यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, माइनस को मैंने हटा दिया था, माइनस के t2 माइनस t1। एक और चीज है, ln a माइनस ln b को क्या लिखते हो, ln a by b, so let's put there ln 60 minus 25 divided by 70 minus 25, this is equal to minus k t2 minus t1. So if enough information is given about T2 and T1, then we can calculate one out of these two, right? So simply you have to use this equation. You have to simply put the values like this. But again, using log is very much problematic. Why problematic? Because log का value निकालना is difficult. So we will use average method, and that I will show you while doing the question. लेकिन यहाँ पे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। हमने ग्राफ उससे पहले किस चीज का पढ़ा था, डेल्टा टी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ऐसा आया था। दो ग्राफ पढ़ना है तुम लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। फर्स्ट ग्राफ इज दिस एंड सेकेंड ग्राफ इज बिटवीन एल एन टी टू माइनस टी वन एंड टाइम। और अगर तुम्हें याद है तो एल एन टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू क्या आया था, ई टू द पावर माइनस के टी प्लस सी। दिस वन वाज द ग्राफ, सॉरी नॉट ln ही है तो e तो नहीं होगा ना यहाँ पे, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे क्या था, माइनस के टी प्लस सी ln। So ln t2 minus t1 you are taking along the y axis, so this is becoming y, time is along the x axis, so graph will look like equal to y equal to minus kt plus c. So this is a straight line graph, right? क्योंकि this one you are putting along the y axis, this along the x axis, so if it is becoming y, then it is looking like in the form of y equal to mx plus c, done it? So graph will be straight line and with negative slope because this m value is negative, so slope here is negative. Negative slope का मतलब क्या होता है, it is making obtuse angle with a positive direction of x axis, here it is time axis. So ln t2 minus t1 versus time का ग्राफ ऐसा होगा, always remember, ठीक है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ पे मैं एवरेज मेथड को एक्सप्लेन, मैं एक बना देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है। तो जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी कूल्स इन 7 फ्रॉम 60 टू, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 60 से 40 वेरी कर रहा है, एंड देन हाउ मच टाइम वी आर टेकिंग, 7 मिनट, ठीक है। फर्स्ट थिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 10 डिग्री, सो दैट टी नॉट इज गिवन, दैट इज हाउ मच, 10 डिग्री। The temperature of body after the next 7 minutes will be what? The temperature of body after the next 7 minutes. Yeah. From to what it will go in next 7 minutes. 60 to 40 it is coming in first 7 minutes. It is asking in next 7 minutes what will happen. So in next 7 minutes it will go from 40 to something. So that something is not known. Let's say it is T. ठीक है, नाउ लेट्स यूज द फॉर्मूला। तो एवरेज मेथड में मैं देखो कैसे सॉल्व करूंगी, एक्चुअली आई विल यूज फर्स्ट इक्वेशन, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के टी, ये इक्वेशन मैं यूज करके बनाऊंगी, नो लॉग नथिंग। सो डेल्टा टी क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ऑफ चाय माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। लेकिन फर्स्ट केस में देखो टेम्परेचर ऑफ चाय 60 से 40 चेंज कर रहा है, सो डेल्टा टी अगर T2 माइनस टी नॉट लिखना है इन टाइम 7 मिनट, सॉरी माइनस के, यहाँ पे मैंने गलती किया ना, इक्वेशन ही गलत लिख दिया, सॉरी, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी सम टाइम। यहाँ पे क्या था, माइनस के टी, क्या था, T2 माइनस टी नॉट, यही था ना।
डेल्टा टी बाई, आई मीन यही क्वेश्चन था ना, एवरीवन अग्री? अगर कंफ्यूज हो रहे हो, आई कैन शो यू बैकवर्ड। हाँ, dt 2/dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर वाज इक्वल टू कांस्टेंट T2 माइनस T1, सेम थिंग आई वाज राइटिंग, ठीक है। सॉरी, देखो यहाँ पे T2 माइनस T0। सो हाउ आई एम गोइंग टू यूज द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में टेम्परेचर फॉल कितना हुआ है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ है, 60 - 40, दैट इज 20। और ये कितने है, 7 मिनट। सो यहाँ पे लिखो 7 मिनट। नाउ द ट्रिक इज हियर, -k। अब T2 का वैल्यू क्या रखें, क्योंकि T2 कांस्टेंट तो नहीं रहा है, 60 से 40 किया है, सो व्हाट टू पुट इन प्लेस ऑफ T2। सो T2 के लिए काम करो, इसका एवरेज निकाल लो, 60 और 40 का एवरेज। सो 60 और 40, क्योंकि एक वैल्यू ले नहीं सकते तो एवरेज तो ले सकते हैं, एवरेज ले लो। 60 + 40, दिस विल बिकम हाउ मच, बाई 2, एवरेज ऐसे निकालते, दो का एवरेज 2/2, सो दिस विल बिकम 50। तो यहाँ पे लिखोगे 50 - 10, डन है। नेक्स्ट केस के लिए इक्वेशन लिख डालो। सो फॉल ऑफ टेम्परेचर कितना, 40 - T, कितने टाइम में, 7 मिनट, हियर ऑल्सो -k, कांस्टेंट तो सेम रहेगा। और यहाँ पे एवरेज तुम क्या लेने वाले हो, यहाँ पे एवरेज हो जाएगा 40 + T/2 -10, ठीक है। अब इन दोनों को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पे दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे, के कैंसिल हो जाएगा। सो सी हियर, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन is like this, second equation is like this। if you are going to divide these two, k कट हो गया, और ये कितना, 7 कट हुआ, कितना बचेगा, 20 डिवाइडेड बाई 40 - T इज इक्वल टू 50 - 40, 40 डिवाइडेड बाई 40 + T - 20 इंटू 2। सो यहाँ से 2 2 10 0, and what value we are going to get, 40 + T - 20 is equal to 40 - T, ठीक है। सो दिस विल गेट कैंसिल, और मेरा आंसर आ रहा है गलत। व्हाट मिस्टेक आई डिड, आई एम नोन फॉर डूइंग मिस्टेक। कहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हुआ, आंसर तो 28 डिग्री है। 2T कितना आ रहा है, मेरा तो 20 आ रहा है, T 10 डिग्री आ रहा है। कहाँ गलत किया, किसी को दिख रहा है क्या? ओके, 40 + T - 20, यहाँ पे गलती किया, 40 - T को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T - 20 इज इक्वल टू 160 - 40। सो दिस विल बिकम 5T इज इक्वल टू 160 + 20, दैट इज 180। सो T विल बी इक्वल टू, अगेन ज्यादा ही आ रहा है, ओ माय गॉड, क्या गलती किया मैंने फिर से, 40 - T को 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने। सो 160 - 40, सही तो लिया लिया। अच्छा, यहाँ पे T + 20 हो, 40 T + 40 - 20 ना, तो ये प्लस में जाएगा, यानी कि 160 - 20, यानी कि 140। ओ माय गॉड, 28 डिग्री, दिस इज द ब्लंडर आई डू, ठीक है। सो एवरेज तुम्हें ऐसे निकालना है, ठीक है। इक्वेशन कौन सा यूज करना होगा, हमेशा याद रखना, इक्वेशन तुम्हें यूज करना है ये वाला, ΔT/ΔT इक्वल टू -k, टेम्परेचर ऑफ बॉडी -T0। यहाँ पे तुम्हें टेक एवरेज, ठीक है, ऑलवेज, डन। और कहीं कहीं क्वेश्चन दे, जैसे ये क्वेश्चन जब करोगे ना, स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा बाय यूजिंग एवरेज मेथड, but when you will see, that answer will be close to the correct answer। so यहाँ पे भी you can use average method, and your answer exactly one won't come as 13/10 T, your answer will be 1.1 T, and here answer given is 1.3 T, but just see here, nothing is more close to, uh, I mean 1.1 T is close to 1.3 T, not to 13/5 T, not to 10/13 T, not to 5/13 T। मेरे कहने का मतलब है you can always use this formula, ठीक है। चलो, so
That was my thing for today. Nothing much to teach. Thank you so much. I took a bit of more time. Thank you. Thank you for staying for this much long. Thank you so much. Take care of yourself and keep solving more questions. Okay? In the next class, I will let you do more 2 or 3 questions from this person, and after that, we will start with what? After that, we will start with next topic. थैंक यू सो मच देवानंद. अच्छे से रहो सभी लोग और अच्छे से पढ़ाई करो. ठीक है. बाय. टेक केयर.